गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो का सब्जेक्ट देख रहे हैं, टॉप 10 बेस्ट शिपिंग कंपनीज इन इंडिया 2024 का ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ये कंपनी जो है, शिपिंग कंपनी है जो फर्स्ट स्थान पे है, मॉक्स लाइन इंडिया लिमिटेड। मॉक्स लाइन इंडिया लिमिटेड इज अ प्राइवेट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश ऑन 3 मार्च 2011 में बना ये कंपनी है और इतना अच्छा आगे फर्स्ट पोजीशन पे है। इट इज क्लासिफाइड एज सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी एंड इज रजिस्टर्ड एट द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज मुंबई। ठीक है, इसका शेयर कैपिटल आप लोग देख रहे हैं, पेड अप कैपिटल देख रहे हैं। इट इज इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। दूसरी कंपनी है एमएससी है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। एमएससी इज अ ग्लोबल शिपिंग कंपनी विथ अ रिमार्केबल प्रेजेंस इन इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। एमएससी plays an important role in the facilitating international trade and transportation. MSC is a privately owned global shipping company founded in 1970 by the Jiangai Upton as one of the world's leading container shipping lines with the headquarters in Geneva, Switzerland. MSC operates over 675 offices across more than 155 countries worldwide with over 150,000 MSC group employees. ठीक है, with access to an integrated network of road, rail and sea transport resources which stretches across the globe. The company prides itself on delivering global services with local knowledge. MSC is a private owned global shipping company. तो ये उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो CMA CGM इज अ लीडिंग ग्लोबल शिपिंग कंपनीज दैट operates in India and plays a crucial role in the country's maritime trade. CGMA का स्थापना जो है 1978 में बाय जैक्वेस सडे ने किया था। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो चौथी कंपनी है वो हापाग लॉयड है। हापाग लॉयड इज अ जर्मन इंटरनेशनल शिपिंग एंड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। हापाग लॉयड इज अ ग्लोबल लीडर इन कंटेनर शिपिंग स्पेशलाइजिंग इन रेफर कार्गो, डेंजरस गुड्स एंड स्पेशल कार्गो प्रोजेक्ट्स। Founded in September 1, 1970, through a merger of Hamburg American Lines and Nordeste Lloyd. The company has a rich history and extensive experience in the maritime industry. The company's modern fleet of vessels, advanced technology system and efficient logistic operations ensure timely and secure delivery of cargo. Hapag-Lloyd is also committed to a sustainability, implementing eco-friendly party practices and initiatives to reduce its environmental impact. जो 5 नंबर की कंपनी है, जो कंपनी विच इज ऑन 5th प्लेस इज ओशियन नेटवर्क एक्सप्रेस, 1ONE, ओशियन नेटवर्क एक्सप्रेस। ओशियन नेटवर्क एक्सप्रेस इज अ जापानीज container transportation and shipping company jointly owned by the Japanese shipping lines Nippon Yusen Kaisa, Mitsui OSK Lines and K Line. One inherited the container shipping operations of its parent companies, corresponding to a combined fleet capacity of about 1.4 million TEU.
Ocean Network Express, that is ONE, wanted to use business process management technology to build an innovative platform with a single source of truth that could help improve and its process while reducing cost and increasing efficiencies across the new global organization. जो 6 नंबर की कंपनी है उसका नाम है यांग मिंग मरीन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यांग मिंग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, commonly known as Yang Ming, is a globally recognized shipping company that operates in India and plays a crucial role in the country's maritime industry. Yang Ming Marine Transportation Corp is a Taiwan-based company majorly engaged in maritime transportation business. The business of the company include domestic and overseas marine cargo and passenger transportation business. The company operates Asian lines, European lines, American lines. The company operates business in Asia North America market, Asia Europe market, transatlantic market and इंट्रा एशिया मार्केट। जो 7 नंबर की कंपनी है वो है OOCL, ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन्स। Orient Overseas Container Lines is renewed global shipping company that operates in India, offering reliable container shipping and logistics solution. Established in 1947, OOCL has grown to become one of the world's leading container transportation and logistics providers. आठवां नंबर है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड जो है इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन बेस्ड है कंपनी और ये केरला में है। is the largest ship building and maintenance facility in India. It is a part of a line of maritime related facilities in the port city of Kochi in the state of Kerala, India. The company is offering a wide range of products including tankers, bulk carriers, platform supply vessels, patrol boats, diving support vessels. Cochin Shipyard is established in 1972. CSL has evolved into one of the largest shipyards in maritime engineering. CSL plays a significant part in the India's maritime industry, contributing to the country's naval defense capability and assisting its commercial shipping sector. The shipyard expertise and capabilities have helped strengthen India's self-reliance and shipbuilding and maintenance. चलिए 9 नंबर की जो कंपनी है वो जेस्को है, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग को लिमिटेड। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न लीडिंग शिपिंग कंपनी विथ अ रिच हिस्ट्री ऑफ डेटिंग back to 1948, headquarters in Mumbai, GE Shipping has established itself a major player in the maritime industry, offering a vast range of shipping and offshore services. GE Shipping fleets comprise various types of vessels, including crude oil tankers, dry bulk carriers, gas carriers, offshore vessels and product tankers. The company operates both domestic and internationally, connecting Indian ports with major global trade routes. दस नंबर है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नो डाउट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है 10 पे ज़रूर आता है, लेकिन यह वो कंपनी है या फिर वो मैरीटाइम सेक्टर है
जिसने बहुतों का उद्धार किया है। द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट कम SCI, is the largest shipping companies in India and one of the country's premier shipping organization. The Shipping Corporation of India was started in 1961 and combining Western Shipping Corporation and Eastern Shipping Corporation. Its headquarters is located in the corporate center Madam Kama Road, Mumbai. It is offering different services like liner and passengers services, bulk carriers and tankers, offshore services. The company is operating and manages vessels that is catering national and international lines. As a public sector undertaking, SCI has been at the forefront of India's shipping industry, offering essential maritime services, fostering trade relationships, and contributing the nation's economic growth. With its large scale of experience, expertise, and global network, the Shipping Corporation of India contributes to be a key driver of India's maritime trade and logistic industry. So thank you for watching this video at the rate Marine Tech Pandeji. Kindly subscribe and share, view the video and हमको आप जो है सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने और भी वीडियो ला सकें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।